आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पूर्णिमा सेलिब्रेशन में। सो व्हाट इज इट टुडे? आज क्या है? एनी आइडियाज? या आज क्या क्या है? इफ आई कैन करेक्ट माई सेल्फ, एनी आइडियाज? आज ना बहुत सारी चीजें। टू स्टार्ट विथ ओके, या थैंक यू फॉर योर आंसर्स। सो लेट मी सम इट अप फॉर यू। आज है कार्तिक पूर्णिमा, दैट मीन्स full moon night of Kartik month. Okay, today is the birthday of Matsyavatara, that is God Vishnu's fish incarnation avatara. Today is also the birthday of a character called Vrinda, who was the personification of Tulsi and Kartikeya. Today is also believed to be the day when Lord Krishna worshipped Radha and they played Rasa to solemnize their true love. और क्या है आज? आज ऐसा कुछ है जो अभी तक गूगल में नहीं आया है, but it is very 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 important for us. Today is birthday of Purnima celebration sessions. जी हाँ, आज के ही दिन से हर मंथ हमने एक दिया जलाना शुरू किया था। ऐसा दिया जो कि उजाला पाने की मजबूरी के लिए नहीं था, बल्कि जो सिंबल था, जो प्रतीक बना सेलिब्रेशन का, सिंबल बना उस धन्यवाद का, उस धन्यवाद की भावना का जो कहती है कि हमें बहुत कुछ मिला है। आओ और हमारे दिए से अपना दिया भी जला लो, अपना अंधेरा भी दूर कर। तो आज के सेशंस थायराइड के लिए नहीं है, डायबिटीज के लिए नहीं है, एएमएच काउंट्स के लिए नहीं है, बीपी और हार्ट इश्यूज के लिए नहीं है, स्ट्रक्चरल पेन्स के लिए नहीं है। आज के सेशंस हैं शुद्ध सेलिब्रेशन के लिए। ठीक है, तो आज के दिन जब एक साल हो रहा है, टुडे इज आवर 12th पूर्णिमा सेलिब्रेशन, तो बस यही निकलता है कि जो भी दिया है बहुत दिया, आगे अब क्या लेना, देख सकूं उस पार भी तुमको, ऐसे नयन मुझे देना, दूर बिठा दे तुमसे ऐसा मोड़ कोई ना हो, ये जीवन पथ मेरा अनजाना प्रभु, तुम मेरे संग रहो. So it is the session where all Kumbhak practitioners meet, celebrate, share their experiences, share their joys, and become available for the huge opportunity to evolve, to sync themselves with moon, and to feel the direct presence of the master who has transformed lives of thousands and thousands of people. जी हाँ, हमारे बहुत अपने, अपनों से भी अपने, हमारे अपने गुरुदेव कुंभक योगी स्वामी राज विभू जी. सो ओवर टू यू स्वामी जी. वितिका ने बताया यहाँ से शुरुआत हुई थी. हाँ, यहाँ से शुरुआत हुई थी, पर ध्यान भी नहीं है कि यहाँ से शुरुआत हुई थी. जीवन का चक्र ऐसा ही होता है. हमें बर्थडे तो मालूम रहता है, पर ये ध्यान नहीं रहता कि सच में हमारा बर्थडे पे ही हुआ था क्या. ये किसी को फील नहीं होता. यू डोंट रियलाइज इट, यू जस्ट सेलिब्रेट द बर्थडे. समबडी टेल्स यू, कोई और आपको बताता है कि आपका जन्म हुआ. सो कार्तिक पूर्णिमा, this is considered as the most important Purnima of the whole year. सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे जरूरी पूर्णिमाशी आज के दिन की मानी जाती है.
एंड जस्ट बिकॉज दिस इज एन अपॉर्चुनिटी, ये एक मौका है। तो मौका किस चीज का है? तो आपको कुछ चीजें बताऊंगा, विल एक्सप्लोर सर्टेन थिंग्स। This is the time, this is the ending time of something called as दक्षिणायन। इसके बाद उत्तरायण शुरू होगा। सो दक्षिणायन का अंतिम पक्ष है और उत्तरायण की ओर धकेलने का पक्ष है, जो आपको उत्तरायण की तरफ धकेलता है। तो इफ यू सी योरसेल्फ, अगर अपने आप को थोड़ा सा देखेंगे इस टाइम पे, इसके पहले लक्ष्मी पूजा हुई। लक्ष्मी इज एन एक्सपेंशन एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। जीवन को जो एक्सपैंड करने का, फैलाने का जो नियम है, वही लक्ष्मी है, द एक्सपेंशन एस्पेक्ट। और उसके बाद हम मनाते हैं सूर्य षष्ठी। शायद सभी लोग नहीं जानते, मगर आपने सुना होगा छठ माह पर ये सूर्य षष्ठी है, सूर्य की उपासना है। और ये कार्तिक मास जो है, इसमें सूर्य और अग्नि, या आप अग्नि बोलें, इनको प्रोमिनेंस दिया जाता है। तो इन दिस कार्तिक मास, सन और फायर इज गिवन प्रोमिनेंस। सो टेल मी, मुझे एक बात बताइए, व्हाट कॉजेज एक्सपेंशन? ऐसी कौन सी चीज है जो फैलाव करती है? फैलाती कौन सी चीज है? आपको किसी चीज को फैलाना है तो क्या करना पड़ेगा? एग्जाम्पल दे। यस, यस अनीता, हीट, गर्म करना पड़ेगा तब वो फैलेगा। सो एक्सपेंशन का मंथ है ना, तो कौन एक्सपैंड करेगा? हु विल एक्सपैंड? हीट, अग्नि, और द सोर्स ऑफ अग्नि सन। सूर्य एक्सपैंड करेगा, अग्नि एक्सपैंड करेगा। देयर इज नो अदर ऑप्शन, अग्नि ही एक्सपैंड करेगा। तो ये बहुत, दिस इज वेरी वेरी लॉजिकल एंड साइंटिफिक, जिसे आप साइंटिफिक कहते हैं ना, वो चीज। सो आई विल गो अ लिटिल डीपर। मैं आपको कुछ, अगर ध्यान से सुनेंगे तो कुछ बहुत ही चीज, नई चीज खुलेगी आपके जीवन में। सो व्हेन यू से क्वालिटी, जब आप कहते हैं गुण, व्हेन यू से क्वालिटी, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या है? क्वालिटी का मतलब क्या होता है? तो इसको हम थोड़ा सा ओपन करते हैं, इस एस्पेक्ट को थोड़ा ओपन करते हैं। In different places you will see different kinds of people and different kinds of vegetation. अलग अलग फल, सब्जियां, अनाज, पेड़ पौधे और इंसान आपको अलग अलग रीजन में मिलेंगे। So within a space of what is called as a small region called Europe, if you go from Germany to UK, you'll see drastic difference between qualities of people.
लोग किस तरीके से बिहेव करते हैं, क्या सोचते हैं, कैसे बोलते हैं, क्या करते हैं, आपको फर्क महसूस होगा। In India, if you move from one state to another, you'll see the difference between qualities of people, the language, the food, the smell. Everything is different. What does it depend upon? ये quality किस चीज के ऊपर निर्भर करता है? What does these qualities depend upon? On because of what these qualities happen? किसकी वजह से ये quality होती है? So environment. Environment itself is a quality. I am asking because of what a particular environment happens. So don't think people are wise. The way we think, we show a little less wisdom. Environment किस वजह से होता है? No. This is something which we need to explore. इसको समझने की जरूरत है. Vegetation, I'm asking vegetation किस वजह से? Vegetation, why vegetation changes? Because of what vegetation changes? I'm asking because of what genetics changes. I'm asking because of what culture changes. Culture तो quality हुआ ना, genetics is a quality, isn't it? Climate is a quality. Culture तो quality है ना. मैं तो ये पूछ रहा हूं आपसे, किसकी वजह से एक पर्टिकुलर कल्चर डेवलप होता है, किसकी वजह से जेनेटिक्स होता है, किसकी वजह से क्या चीज होती है? पंचतत्व. पंचतत्व तो हर जगह है. बिकॉज ऑफ सेम पंचतत्व डिफरेंट क्वालिटीज बिल्ड अप. यस और नो? सेम पंचतत्व ना, and so many different qualities, so many different bodies, so many different genetics, so many different environment, energies you don't know. Energy की हम बातें ही करते हैं, we actually don't know energy. So this needs to be explored. I am telling you what, मैं आपको बताता हूं. Even Panchatattva happens because of that. What is Panchatattva? Let's start from there. वहीं से शुरू करता है. What is Panchatattva? It is various densities. Yes or no? What is Panchatattva? It is various densities. The Akash Tattva, which is the most subtlest, you can't even experience Akash Tattva. Consciously you don't experience Akash Tattva, but yes, it is not in your awareness, but yes, it is there. You experience Vayu Tattva. Vayu को आप अनुभव करते हैं ना, because Vayu is a little more denser than Akash. थोड़ा घनत्व ज्यादा है, धृत ज्यादा है, उसके अंदर धरती ज्यादा है, धर्म ज्यादा है, धारण ज्यादा है. So it is a little more dense. उससे भी ज्यादा डेंस क्या होता है? अग्नि तत्व is even denser than वायु तत्व. अग्नि को आपने एक्सपीरियंस कुछ ज्यादा होता है वायु तत्व से. So Agni is a little more denser. Agni gives a form. When we call as darshan, जब हम दर्शन कहते हैं, it is because of Agni. Form happens. Form that you can see. Form that you can experience. That is why Jala Tattva comes into play after that. Little more denser than Agni, and it has a form, a flexible form. जल तत्व अग्नि से भी ज्यादा धृत होता है, उसकी धारणा ज्यादा होती है, वो ज्यादा भारी होता है,
वो ज्यादा डेंस होता है. देन कम्स पृथ्वी, इवन मोर डेंसर देन जल तत्व. इसीलिए हम अपनी पृथ्वी को धरती कहते हैं. धृत, इट इज वेरी डेंस. So density creates quality. ये डेंसिटी का ही तो फर्क है. इट इज जस्ट अ डिफरेंस ऑफ डेंसिटीज. डेंसिटीज की वजह से अलग अलग डिफरेंट क्वालिटीज कम्स इनटू प्ले. Now, if you see life getting born at one place, what will be the quality of life there? It will depend on the densities around that life, that place of birth. अच्छा चलिए, आपको मैं थोड़ा सा relevant बना देता हूं उसको. Let's make it a little more relevant. When you are born, one of the reason or one of the helping factor, एक कारक जो आपके बर्थ में आपकी मदद करता है, which helps in you taking birth, is the cosmic geometry. ब्रह्मांड में कौन सी भारी चीज कहां पे है? एस्ट्रोलॉजी कभी आपने सोचा क्या करती है? एस्ट्रोलॉजी इज जस्ट ट्राइंग टू कैलकुलेट और सी कौन सी भारी चीज कहां पे है. एंड बिकॉज ऑफ दैट यू विल गेट इन अ क्वालिटी. व्हाट इज कॉस्मिक एनर्जी? अभी पहले जो बोल रहे हैं वो समझिए. एनर्जी और एनर्जी छोड़ो, एनर्जी आप नहीं जानते. फॉरगेट अबाउट एनर्जी. सो कौन से घर में आपका मंगल बैठा है, कौन से घर में आपका बृहस्पति बैठा है, यही तो बात कर रहे हैं. दिस इज एस्ट्रोलॉजी, इजंट इट? सो नियर बाय ज्योमेट्री, कॉस्मिक, कॉस्मिक वर्ड नहीं समझ में आता. ब्रह्मांडीय, आपके आसपास में किस तरीके की डेंसिटीज हैं, डिफरेंट डेंसिटीज अराउंड यू. आप कॉस्मोस क्या है? ब्रह्मांड और यूनिवर्स, वी कॉल इट यूनिवर्स भी कहते हैं इसको, कॉस्मोस भी कहते हैं. कॉस्मोस इज अ रशियन वर्ड फॉर यूनिवर्स. यूनिवर्स के लिए रशियन वर्ड है कॉस्मोस. इन संस्कृत इट इज कॉल्ड एज ब्रह्मांड. सो आपके आसपास कौन सा प्लैनेट, व्हाट प्लैनेट इज वेयर, will decide what quality you will get. हाँ या ना? आप अभी इसको जानते नहीं, don't know. You don't know, but yes, it impacts. Only densities create quality. Positioning, geometry of density. आसपास में कौन सा भार किस जगह पे है, किस वेलोसिटी से मूव कर, कैसी वेग से चलता है. The movement of planets around you and the various planets and density, because they are all different densities. Now Jupiter has more density, zyada bhari hai na, and the other planets have less. So I am talking in fundamental terms, density की बात कर. I am not talking in terms of planet. मैं planet के terms में बात नहीं कर रहा, मैं ग्रहों के शब्द में बात नहीं कर रहा, मैं घृत के शब्द में बात कर रहा हूं, घनत्व के शब्द में बात कर रहा हूं. So different densities decide what kind of qualities you will get. So what is different environment? एक पहाड़ी इलाका, a mountain area, an area around a sea, coastal area, एक plain area,
पठारी एरिया. What is environment? It is various densities. Yes or no? हाँ या ना? So आपकी क्वालिटीज कौन बनाता है? डेंसिटी. The density creating various qualities is called as dharma. तो आपको किसने धारण किया हुआ है? What has created you and your qualities? Dharma. Without dharma, no life, no quality, no existence. So when different densities create different qualities, this beautiful exposition and formation is called as dharma. Now tell me, is it scientific or not? It is more than what modern science can even think of. That is why I always say, India bleeds science. Our blood is science. वो तो फिरंगी चुरा के ले गया, उनको हजम नहीं हो रहा. So different densities create different environment. अब आप मुझे बताइए, टेल मी नाउ, is densities or is elevated structures important? क्या पहाड़ों की इंपॉर्टेंस है पृथ्वी पे? The moment these densities will change, it will change your quality. तो एक योगी पहाड़ों में क्यों चला जाता है? एक योगी पहाड़ों पे क्यों चला जाता है? Because wherever there is huge densities around, आसपास में अगर बहुत धारण करने वाली चीज है, then the person can be sure now he can shoot up. आप बिना डरे उठेंगे कैसे? जब आपको मालूम है ना नीचे कोई रोकने वाला है. You will not get imbalanced. You will not get disbalanced. What is a yogi trying to do in his life? Trying to go up, trying to evolve. Evolution. एक ही पर्पस है जीवन का. Only one purpose for a yogi, to evolve. How can a yogi evolve securely without getting imbalanced? आप अगर ज्यादा उठने की कोशिश करेंगे, गिरेंगे तो बहुत मुश्किल आ जाएगी, और गलत दिशा में जाएंगे तो भी गड़बड़ी आ जाएगी. इफ यू गो इन अ रॉन्ग डायरेक्शन, अगर रॉकेट, इफ यू शूट अ रॉकेट नॉट राइट, a little tilted, what will happen? Disaster. So I'm talking about the science of evolution. He needs the right amount of density to hold him right. Now the whole science of astrology, what you call as astrology, is the science of understanding various qualities depending upon the movement of densities around. भार का आपस में कैसा गेम चल रहा है, ये समझना एस्ट्रोलॉजी है. So when Parashar looked at these things, when Rishi Parashar looked at these things, he just went deep and deep and deep into it. So not only Parashar, there are other people also who went into it and saw how densities impact a human being. And if there is a difficulty in life, how you can correct it by different arrangements. अलग अलग अरेंजमेंट करके आप इसको ठीक कैसे कर सकते हैं?
So different sciences came up. वास्तु शास्त्र आप जानते हैं ना, सुना होगा. वस्तु से बना है वास्तु, isn't it? Vastu has come from the root vastu. Vastu means what? Which has density. What is vastu? Which has density. So आप densities को change करके, how you can change different densities around you and create a conducive situation. क्या मजेदार चीज है ना? Very interesting, isn't it? So Vastu, astrology, Vastu, and what not. कोई भी शास्त्र उठा लीजिए, pick up any शास्त्र, tell me any शास्त्र, any शास्त्र you know, it is शास्त्र of density, that's it. इसके अलावा कुछ भी नहीं है. अब जेम्स वेम्स करते हैं ना, अंगूठी पहना, सोना पहना, चांदी पहना, जेम्स, what is that? Wearing different densities, yes or no? What is Ayurveda? What is medicine? It is a science of various densities impacting your body. Yes or no? When you say Vata, Pitta, Kapha, it is different densities. When you say electron, proton, neutron, these are three different densities. When you say guna, guna means density. So guna is density. उसी का dense form क्या है? What is the dense or materially dense form of gunas? Genetics. Your gunas only convert into your genetics, isn't it? या genetics होगा तो उससे अलग अलग गुण दिखाई देंगे. You'll see different gunas due to different genetics. Yes or no? So what are the planets? They are different gunas because they are different densities. What is Mercury? Learning ability. क्या है Mercury? What is Mercury? Learning ability. What is Moon? Mind, mental faculty, which can also result to something called as emotional structure of a human. What is Sun? What is Sun? सूर्य क्या है? सूर्य is Atma, or in a very rudimentary term, you can call it soul. What is Venus? ये सबको मालूम होना चाहिए. What is Mangal? Enjoyment. How much you can enjoy something. The ability to enjoy or celebrate. Ability वो नहीं होगी. ज्यादा लॉजिक जो यूज करते हैं ना, मंगल हल्का है उनका. जितने लोग ज्यादा लॉजिक, पीपल हु यूज लॉट ऑफ लॉजिक, मंगल कमजोर है. Yes, Venus is also beauty because you enjoy beauty.
So I'm decoding everything for you. और थोड़ा सा मजेदार चीज करें. What are your organs? What are your organs? आपके शरीर में organs क्या हैं? Tissues of various density, yes or no? That is why in Indian tradition, Sanatan tradition, we don't define things from what we see. We always define things through its quality. और लोगों को वो दिखता नहीं है. People can't see the quality. The whole Western culture is about describing the form. The whole Sanatan culture is about describing the quality, which is great. फर्क समझ में आया आपको वेस्ट और इंडिया में? और आई वुड से इंडिया एंड एवरीथिंग एल्स. This is the only culture which describes things in terms of quality, not in terms of form. ठीक है? So when we say Sura, it is a certain quality. Pro-life quality is called as Sura. Anti-life quality is called as Asura. So when you say Sura, Asura, it is quality. And we can always personify a quality. Yes or no? हमेशा क्वालिटी को पर्सोनिफाई कर सकते हैं आप. That is why everything is said in terms of a personality. आपके अंदर, in you, there are 3 qualities or which are hindrances for becoming free, to get freedom. There are 3 hindrances, 3 barriers. 3 quality आपके अंदर ऐसी हैं which will not allow you to be free. These are called as Tripurasura. Asura है ना? Asura means anti-life, anti-progression. Tripura fundamentally means taking in 3 qualities, life gets formed. So you are living in a world of 3 qualities, fundamental 3 qualities. That is why it is called as Tripura. The energy, अब energy बोल रहा हूं, you don't understand energy, but I'll say for the sake of lack of vocabulary, I will say energy. और कोई शब्द नहीं है, क्या बोले? The energy which manifests these 3 qualities is called as Tripura Sundari. हाँ, सुना नाम आपने? The energy of this universe. It is also called as Maya Shakti. Tripura Sundari, the manifestation, the energy which manifested this whole universe is called as Tripura Sundari. So the universe is feminine. ठीक है, आपके आइडियाज तोड़ देता हूं थोड़ा. मेल का यहाँ पे कोई काम नहीं है. Male is a visitor. The whole universe is feminine. Universe is feminine.
Tripurasura. Now when the energy would want to manifest, इच्छा किसकी होती है? फीमेल की. काम कौन करता है? मेल. मेल थोड़ा मजदूर है. मेल इज अ, क्या कहते हैं उसको? मजदूर को क्या कहते हैं? वर्कर. So when a female desires, male works towards it. Labor, laborer. So when the feminine desires, when Shakti desires, Shiva manifests itself or creates that condition. When Shakti desired to evolve, Shiva killed Tripurasura for her to evolve. ठीक है? अच्छा, फिर हम कहीं और चले जाएंगे. फिर you will not be able to connect with your life. Then it becomes difficult. So you are expanding in this month. Yes, this is a month of expansion. Yes or no? हाँ, हमने यही बात किया ना. आपको दीपावली का वीडियो मिला? Have you got the video of Deepavali? Expansion. So what will help in expansion? What will help in expansion? Agni. Agni will help in expansion. But expansion also creates something called as slow down. Slow down. ऐसा ही होता है ना? When you expand, it also creates a little slow down. कितना फैलेंगे? फैलेंगे तो धीरे हो जाएंगे. You'll become slow. So this is also the month where, in terms of your experience, things become slow. But that is not a good sign. Slow nahi hona is month mein. So you need to push in to make extra effort. तो पूछ में बम चला के लगा दो, जला दो. बम फूटेगा तो उछलोगे ना. You need to jump because you are slowing down. So listen to heavy metal, dham dham dham. थोड़ी जान आएगी शरीर में. So crackers is not about Deepavali. It is about this month and the next month. Crackers क्यों जलाते हैं? It is not about Deepavali. It has nothing to do with Deepavali. It's a science for creating a little more alertness because you are slowing down. In South India, people early morning, they'll get up early morning, they'll take a cold water bath and they'll do bhajan and kirtan on road. Why? You don't want to slow down. It's a huge opportunity you have got. एक बहुत सुंदर opportunity है to enter into Kaivalya Pada. From Sadhana Pada, from Dakshinayan, you want to enter Uttarayan. Dakshinayan is working period. Uttarayan is harvesting period. जो आपने साधना की उसका फल भोगना है आपको, उसको फल मिलेगा. Not a time to slow down. So you have got the last hour. कहते हैं ना, आखिरी एग्जाम का लास्ट मिनट जो होता है ना, the last minute of examination. How you hurry up. कैसा तेजी करते हैं कि सारी दुनिया इसी समय लिख दो. This is the last hour. Not a time to slow down. So थोड़ा पूछ में क्रैकर जलाओ. हाँ, just do a little more body movement. शरीर को थोड़ा ज्यादा इस्तेमाल कीजिए. Don't sit idle at home. कुछ नहीं है तो बाहर वैसे ही निकल जाओ. Create a little more effort. Push yourself a little more. Because Kaivalya Pada is coming. अभी रुकने का समय नहीं है. This is the last hour. अभी रुकने का समय नहीं है.
सो कंपल्शंस, टाइम कितना हो रहा है? ओके, सो कंपल्शंस, अच्छा ये तो हम बात करते रहेंगे। ऑल दोज गर्भाधान पीपल गर्भाधान वाले लोग, for you also it is an opportunity. You have to take support of Agni for conception. कंसेप्शन के लिए थोड़ी ऊर्जा की जरूरत है इस वक्त में आपको, एंड दिस इज द राइट टाइम। 6 is very important number. 6, you have 6 taste. आपके 6 टेस्ट होते हैं, isn't it? You can only work on 6 different dimensions of life, or we also call it chakras. आप केवल 6 चक्रों तक काम कर सकते हैं. You can't go beyond that, right? So you have Panchatattva along with your Atma. This becomes 6 elements. ठीक है? So 6 is a very, very important number. Now what happened? So Tripura Asura, the moment life happens, Asura gets born. जीवन के साथ में सुर और असुर दो चीजें पैदा होते हैं. Yes, you can start, you finish off and then you just relax, come up. है ना, अभी शुरू कर सकते. Just finish off 6 rounds and relax for a while. So 6 is an important number. So when Asura gets born, for the continuation, because Asura is anti-life, the forces are anti-life and there are pro-life forces. ये दो के बगैर नहीं काम चलेगा. There cannot be a Sura without Asura and Asura without Asura. There cannot be life without death or death without life. So this is the culture which worships death. If you want a better life, you need a better death. This is very important. So Asura, and Asura needs to be balanced with Sura, always. This is whole Purana, fight between Sura and Asura. So there is a Tripura Asura, the 3 tendencies which will stop your expansion. Now that also, these qualities also need somebody very powerful. So these qualities needs a very powerful quality to actually get balance. Now it is said in the traditions that he asked for a boon and he said only, and from whom? From Shiva. The whole universe is considered as the manifestation of Shiva because of the demand of Shakti. So the whole existence is Shiva and is working on the demand of Shakti. So Shiva Shakti principle. Now the Asura wants that nobody should be able to kill me, not even you, Shiva. So whom? Only if you bear a child. And he knows nobody can handle the ojas of Shiva. Nobody can handle the virya of Shiva. So he says, only your son can kill me. He says, okay. Shiva doesn't care. Huh? He has his eyes closed. आंखें तो बंद है ना उनकी, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता. Now power जब आ जाती है ना, it remains beautiful
till a certain point of time. After that, it becomes destructive. So it happens. This is the nature of life. ये प्रकृति का नियम है. When destruction happens, when it becomes destructive, you need to balance it. उसको balance करना जरूरी है. Now it is time for Shiva's son to be born. पर कैसे करें? औगड़ बाबा को कैसे मनाएं? So a samadhist person, a person in samadhi, you can't do anything about that person. So distraction के लिए, to distract Shiva, Kama and Rati was sent or introduced. कामदेव को बोला गया, भैया इसका कुछ करो जरा. Kam and Rati, always there is male and female work together. अकेले काम नहीं करते हमेशा. ये समझो. Duality, this is dual world. Now samadhi's person, अगर समाधि में है, वो परम आनंद में, somebody is in ecstasy, you distract that person. That person will be very fierce. छोड़ेगा नहीं वो. उसके मजे को आपने हटा दिया, वो मजे ले रहा था, आपने रोक दिया उसका. So when Shiva got up from samadhi, he was very fierce. इतना फेयर्स थे कि काम और रति दोनों, कामदेव भस्म हो गए. He could bear the energy of Shiva. And he is a husband of Rati. So Rati cursed Shiva. Rati ने शिव को कर्स कर दिया. Your wife will not be able to bear your तेज, और आपके शुक्र को, शुक्राणु को आपकी वाइफ नहीं झेल पाएगी. So he cursed Parvati to be barren. अब पार्वती तो बेयर नहीं कर सकते शिव के बच्चे को, बट पुत्र तो पैदा होना है. So whom, किसको दिया जाए, किसको? Nobody was eligible. गंगा के बारे में सोचा गया, but she couldn't bear it also. Then 6 feminine qualities was chosen. That quality is called as Kritika. कृतिका नक्षत्र भी है ना. You know कृतिका नक्षत्र. This is कार्तिक मास, कृतिका के नाम पे है. So what are nakshatra? What is nakshatra? Arrangement of certain stars, isn't it? Certain density. So they were chosen to bear the वीर्य of Shiva. ये 6 के 6 क्वालिटीज ने शिव को धारण किया. But after a certain time period, they couldn't bear that also. वो भी नहीं झेल पाए, तो उन्होंने abort कर दिया unborn babies को. They aborted these unborn babies. 6 different babies with 6 qualities of existence. Then what Parvati did, she combined them together, all the qualities. She was also yogini and she had certain siddhis. She combined the 6 qualities and created an artificial womb. एक pot create किया जिसमें ये 6 qualities, she merged these 6 qualities.
and created an artificial atmosphere for these qualities to take birth. And ultimately, it took its actual form and was named as Shanmugam, 6 qualities. Skanda, or because Kritikas were there, were his mother, so Kartikeya. So Kartikeya took birth. Because of Kritika Nakshatra, the qualities he bore was like undefeatable qualities. You can't defeat Kartikeya. Skanda, as the word Skanda went westwards, Skanda शब्द जब वेस्ट की तरफ में जाता है, it becomes Skandar, Ishkandar and Sikandar. Sikandar was named after Kartikeya. Sikandar, the greatest fool, was named after Kartikeya. In Afghanistan, you'll see Skandar is our name people take. Skanda, Kartikeya. Kritika also means cutting through. So valor, or in Tamil, veil, becomes the weapon of Kartikeya. Spear. Bhala, Hindi में Bhala. Veil in Tamil. It becomes veil. It is actually a symbolism of valor. So people born under this nakshatra also have qualities of what you call as the head of war, head of an army. Skanda is also considered as the head of army of Deva. देवताओं की जो आर्मी है उनके हेड हैं, सेनापति हैं. So you need a valor, you need certain intensity to cut through the barriers of growth. आपके एवोल्यूशन में जो रुकावटें पैदा हो रही है उसको तोड़ने के लिए, उसको काटने के लिए you need a certain intensity. And Kartikeya is a symbol of intensity. So this is also the time of Kartikeya. This is also the time when Vishnu woke up from his deep sleep, which also suggests that you can become conscious. There is an opportunity to become conscious, to become mukta, to achieve kaivalya, to achieve nirvana, to achieve samadhi, to become free from the restrictions and the process of life, to get into the state of yoga, to become one with the existence, and so on and so forth. So a very important time period, an opportunity. And that is why
it is customary or in traditions, you light lamps in this time period, at least 3 lamps, not one, more lamps. And this is the time period when if you go to Skandasthana, there are 6 Skandasthana in south, 6 अलग-अलग स्कंद के और कार्तिकेय के मंदिर हैं. 6 sthanas where you'll see Deepotsava, बहुत light, Agni, light, and a lot of things happen at that festive. इस समय पे बड़ा फेस्टिवल होता है. तो कहां से कहां पहुंच गए? Qualities, qualities, qualities. We are just talking about qualities. Your life is a progression from one quality to another quality to another quality to another quality. And the most prominent quality is called as mukti, moksha, enlightenment, the biggest quality. So it is all about quality. People finish with their practice. Finish ho gaya practice? Done with their practice? So slowly we will also move towards our practice. हम अपने practice की तरफ चलेंगे. Your organs are also qualities. Your organs are also tissues of various densities. So there are 7 different densities of tissue. One is all across the globe. The others are formed within the body. So rasa, there is something called as rasa. Now it is the exchange of rasa, which you call as the process of life. Jeevan jo hai wo, it is just a little exchange of rasas. And this exchange of rasas creates various densities, and therefore thereby different qualities are formed. So when it enters your body, आपके शरीर में जब रस enter करता है, when let's talk about in a very, very rudimentary manner, food. It's like everything is about rasa and your conversion to dhatu. You take an information, that is also, you take a particular quality and convert it into applications or dhatus. When you take rasa, or food is basically a particular quality. What is different types of food? Different types of quality. So if you think in terms of quality, quality can be translated into rasa when you are talking about a material thing or a food. जब भोजन के बारे में बात कर रहे हैं, then you can, it is like almost क्या कहते हैं, पर्यायवाची, synonym. Quality and rasa are synonym. So rasa is a quality. So if you think food in terms of quality, you can derive health out of it. But if you think food in terms of protein, fat, vitamin, mineral, and so on and so forth, you are a dumb fool. You will never get health. Am I talking something which has a, today is the proof of that. Proof है उसका हमारे पास में. The way we are talking about food, food has become poison for us. भोजन से ही आज की बीमारियां चल रही हैं ज्यादातर तो. If you correct your food, almost like 50% of the total, 50 to 60%, or more than that even, of the total world problem or difficulties will get solved. But ठीक कैसे करेंगे? तो आप बात ही गलत कर रहे हैं. आपके पास लैंग्वेज ही नहीं है सही बोलने की.
You don't even have a language to speak the correct things. So if you think food in terms of quality, there is a chance of health. There is a chance. But food, never think food will evolve you. Your effort will only evolve you. Food can help making the effort, required effort. भोजन से आप इवॉल्व नहीं होते. भोजन आपको मदद करता है कि आप सही एफर्ट लगा के इवॉल्व हों. It sets the ground, it sets the base, it creates a good base. But food को हमने जहर बना दिया आज के टाइम पे. So if you think food in terms of quality, you'll know what to cook, how to cook, when to eat, how to eat. आपको सारी चीज डिकोड हो जाएगी. But if you think food in terms of protein, fat, vitamin, mineral, you are a dumbass and nobody can help you. So rasa, it creates a quality called as rakta. What is rakta? अब तो बताइए. It's a quality. मेरा खून तुम्हारा खून दोनों का खून लाल है, मगर क्वालिटी अलग अलग है साहब. बहुत अलग अलग है. अब फर्क समझ में आ रहा है? अब फर्क पता चल रहा है. Are you able to appreciate the difference? And we have never created any difficulty through differences. This is the only culture which celebrates differences. जिसको आप प्लूरैलिटी बोलते हो, वो हमारा खून है. प्लूरैलिटी बोलते हैं ना, ये वेस्टर्न फिरंगी और ये नक्सली और ये लेफ्टिस्ट bloody fools of this world. They have destroyed the world. Criminals of this world. This is the only culture which is plural by nature. So रक्त का रंग लाल है, मगर क्वालिटी अलग अलग है. अब आप अप्रिशिएट कीजिए, व्हाट इज द डिफरेंस. कैसे उस डिफरेंस को अपने एम्पावरमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं. हाउ कैन यू क्रिएट एम्पावरमेंट फॉर योरसेल्फ. Rakta, it becomes mansa. Various tissues and tissues come together to form various organs. Mansa. Mans again. अब आप यहां भी देखेंगे, it's going at various levels of density. It is just density. Mans is different density. Meda is different density. It is the adipose tissue or the lubricating aspect or the fat or the cholesterol, triglyceride and whatnot. Asthi, bone. Majja, bone marrow. Shukra, sperm and ovum. It requires maximum energy to create sperm and ovum. Thereby, it has maximum density of energy. Your genetics is your sperm and ovum, isn't it? आपकी सारी क्वालिटी को इतने से में सिकोड़ दिया. मैक्सिमम डेंसिटी. आई एम टॉकिंग अबाउट क्वालिटी. मैं क्वालिटी की बात कर रहा हूं. So sapt dhatu, which becomes denser and denser and denser and denser, and thereby different qualities. इसीलिए फंक्शन भी अलग होता है, काम भी अलग करते हैं सब ऑर्गन्स, isn't it? Because of various densities. So if you do not establish this sapt dhatu within yourself, there is no health.
What you call as disease is a disintegration of dhatu. What you call as health is an integration of dhatu, or establishment of dhatus, integration of dhatus. आप तो एल्यूमिनियम में खाते हैं ना आजकल, हल्का चीज इस्तेमाल करते हैं ना, धातु कम हो जाएगा, हल्की चीज इस्तेमाल करो. डोंट यूज लाइट थिंग्स. प्लास्टिक इस्तेमाल करते हैं ना, यूज प्लास्टिक. मेटल इस्तेमाल करो. जब तक आप डेंसिटी नहीं बढ़ाओगे अपनी लाइफ में, सी व्हाट वी हैव बिकम, लैक ऑफ डेंसिटी. जबान पे डेंसिटी नहीं है, फिसल जाती है जबान. अंग्रेजी क्या है? लेस डेंस लैंग्वेज. फिसलती है ना, पानी गिरा हुआ जमीन पे, फिसल जाओ, वो अंग्रेजी भाषा है. इट डजंट स्टेज. भार नहीं है भाषा में. देयर इज नो वेट इन द लैंग्वेज. इंसानों में क्या भार होगा? The most dense language is Sanskrit. The most dense language is Sanskrit. संस्कृत बोलोगे हेल्दी हो जाओगे, अंग्रेजी बोलोगे बीमार हो जाओ. What we have chosen? Please speak in English also. Okay, I'm not criticizing the language. The only thing is, even if you speak English, you should create a little weight in English. इंग्लिश को भी अपना लीजिए ना, इंडियन बना लो. फिसल फिसल के नहीं बोलना है ना. डोंट कॉपी द वेस्ट. इफ यू टेक इन अ लैंग्वेज, मेक इट योर्स. भाई नूडल खाना है तो ठीक है, इंडियन नूडल बना लो उसको अपना. मेक इट अ लिटिल डेंस. मेक इट अ लिटिल डेंस. गंभीर. There is a word in Sanskrit that is called as a Gambhira. Gambhira means what? Gambhira means it has a little more density. थोड़ा सा गंभीर बना लीजिए चीजों को. So we'll keep talking. अगर ऐसे ही बात करते गए, and the night will pass away. कुछ कर लेते हैं. It's already 11:25. एक या दो क्वेश्चन ले सकते हैं. So the questions are permitted, but it should not be related to your disease, should not be related to and the programs. Still, if you have any burning question, you can write in the chat box, please. Or raise your hand. What was the mantra and its meaning? What do you want meaning for everything? Sound creates a quality. Just experience the quality. Meaning से आज तक किसको क्या मिला है? इतनी समझदारी लेके कहाँ जाएंगे? अनुभव लेके जा सकते हैं. You can take experiences, not understanding. So Tamil language is a language which has a sense of keeping sounds in a particular way. And since it is like contemporary to Sanskrit, Sanskrit language is also a language where the meaning or the quality of the sound is arranged in a way where it creates a certain atmosphere.
That is why I said whatever is being said or chanted, you just listen. इसीलिए मीनिंग नहीं बता, मीनिंग से कुछ नहीं मिलने वाला. Don't worry about that. Swamiji, why you didn't take us to the last chakra? It is not a chakra. So you can go up to whatever to Agnya. After Agnya, you can't go anywhere. Existence takes you on a due course. वो आपने देखिए इंडिपेंडेंस डे मूवी है ना हॉलीवुड में, वो मदरशिप में जब एक बार चले जाते हैं तो उनके सारे कंट्रोल खो जाते हैं. If you go enter the mothership, your all the controls, you lose all the controls. So mothership में enter करना तक you have control. Agnya, till Agnya you have control. After that you don't have control. Where do you want to go then? It's just acceptance. उसके बाद गुरु तत्व की इच्छा. Alka ji, you can unmute yourself. Somebody, it is not about language. I'm not saying language. Any language is not bad. No language is bad. The only thing is you just create a little quality in it. Build a little quality in it. Make it yours. Hello. Yes, Nitin ji. Yeah, Swamiji, I wanted to ask one question. In the starting of the session, you told one story, na, about from Dakshinayan to Uttarayan, and Vishnu is sleeping. So I have read somewhere that when Vishnu sleeps for 4 months, that period is called Chaturmas, and if a lady conceives in that period, na, then that child is not a healthy child. So is this true or how, means? The interesting thing about human mind is that it can create whatever it wants to. So that is why this world is called as the universe is called as Kalpavriksha. Whatever you think you can create. It may not be true for whatever you think, for everything. No, it may not be true. If it is, if the person conceives or a lady conceives in those Chaturmasa, it is not good. So, not really. Not really. That is why logic doesn't work everywhere. And that is why logic has its own limitation. You know, in all the Navgrahas, there is something called as Rahu. Rahu doesn't believe any rule. So if a child takes birth in Chaturmasa and his Rahu is great, then he'll conquer the whole world. You can't stop that person. So howsoever you want to think, it will have a little limitation. It will fail at some point of time. Now this is the tragedy of science. Whatever it thinks, it has a wall, ending wall, beyond which they don't know. So not really true. When Vishnu is sleeping, it only means you can enjoy the world. So when Vishnu wakes up,
You'll have to wake up from the limitations of what we have done. To enjoy, you need a little insensitivity. That is why Asura enjoys a lot. You need a little Asura sense in you to actually take joy, because every joy is on something or somebody. When you quench your hunger and thirst, it is upon some life. So to enjoy the quenching of thirst or hunger, you kill a life. It needs a little insensitivity to live through life. If you become too much sensitive, you will not enjoy the process of life. That is why there will always be certain people who would not want to enter what you call as the game of life, or Maya Jala, Indra Jala. So they will always try to move away from it and take sannyasa. Almost 20% of the people born, if it is the right time, depending on time or yoga, around 20% people, and as the yoga progresses, it is more, but even in other yogas, 20% of people, they will be sensitive. So they would not enjoy the process of worldly life. So it's a period to enjoy also. Okay, so we need to close this session now. Thank you so much for participating. बहुत सारे सवाल हमारे कभी खत्म नहीं होते हैं. So just keep enjoying the beautiful experience that you just had. Also कई participants हमसे बोलते हैं स्वामी जी से 1-to-1 बात हो सकती है क्या, कैसे हम उनसे कनेक्ट करें. So एक छोटे बच्चे से किसी ने पूछा कि ईश्वर कितना बड़ा, तो उसने अपने हाथ फैला के बोल दिया इतना बड़ा. ठीक है, तो इस चीज से आता है समझ में कि आप जितना अलाउ करें उतना बड़ा. तो जिस स्वामी जी की प्रेजेंस जितनी फील करना चाहे, जितना अलाउ करें खुद को कनेक्ट होने के लिए, उतने उपलब्ध होंगे. सवाल खत्म नहीं होंगे, जवाब खत्म नहीं होंगे. सेलिब्रेशन चालू रखिए, एंजॉय कीजिए एंड जस्ट बी मोर लाइवली. हैप्पी कुंभक टू यू. नमस्कार.